Jai Shri Ram. Apologies for the slight delay in the start. We had some technical difficulties, but fortunately we have sorted that out. We're going to begin with the preliminary puja, mantras, washing of hands, etc. So please sprinkle water on all the prayer goods and all the participating devotees. Om apavitraha pavitro va sarvavasthangato va yasmaret pundarikaksham sabahyabhyantara shuchi. You're going to sip water from the palm of your right hand, once for each mantra. Om Keshavaya Namaha. Next, again. Om Narayanaya Namaha. Third time. Om Madhavaya Namaha. To rinse your hands. Om Rishikeshaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. You may place a kus ring piping on your right hand ring finger where it is available. Om Pavitresto Vaishnavyo Saviturvaha Prasavaha Utpunamya Chidrena Pavitrena Suryasya Rashmadhihi Tasyate Pavitrapate Pavitraputasya Yattakamaha Punetatchakeyam. Place the chandan dot on your forehead using your thumb. Om Chandanam Bandhate Nityam Pavitram Papanashanam Apadam Harite Nityam Lakshmir Vasatu Sarvada. Light your lamp. Om Bhodipa Tvam Brahma Rupa Andhakara Nivaraka Imamayankang Puja Grihastejo Pravardhaya. Om Deepaya Namaha. We are now going to begin with the Ved mantras, recitation of Ved mantras. You may follow on your screen. Om. 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 Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Dhyana Moolam Gurur Murti, Puja Moolam Guru Padam, Mantra Moolam Gurur Vakyam, Moksha Moolam Guru Kripa. Om Swastina Indro Vridashravaha, Swastina Pusha Vishwavedaha, Swastina Starikshur Arishtanemihi, Swastino Brihaspatirdadhatu, Om Payah Prithivyam Paya Oshadishu, Payo Divyantarikshe Payodhaha, Payaswatihi Pradishaha Santu Mahyam. Om Vishnorarathamasi Vishnoha, Snaptresto Vishnoha, Syurasi Vishnurdhruvasi, Vaishnavamasi Vishnave Tva. Om Agnir Devata Vato Devata, Suryo Devata Chandrama Devata, Vasavo Devata Rudra Devata Ditya Devata, Maruto Devata Vishwe Deva Devata, Brihaspatir Devatendro Devata, Varuno Devata. Om Dyahu Shantir Antariksha Gwam
शान्तिः पृथिवी शान्तिर् आपः शान्तिर्ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्मः शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दबधासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतान् देवानागं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानागं सत्यम् उपसेदिमा वयम् देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॐ तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रम् अदितिं दक्षमस्त्रिधम् अर्यमनं वरुणगं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्कर ॐ तन्नो वातु मयो भुवातु भेषजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस् तदश्विना शृणुतन्निष्णयायुगम् ॐ तमीशानं जगतस्तस्तुषस्पतिं धियं जिन्वमवसेहुमहे वयम् पूषानो यथा वेद सामसद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पृषदश्वा पृश्निम् आतरः शुभं यावानो विततेषु जग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम आक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनुर्भिर्यशेमहि दिवहितं यदायुः ॐ शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मधयारि ऋषतायुर्गन्तौः ॐ अदितिर्ध्योरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम् ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सओजो मयि प्राणपानौ ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रेर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नाकं गृभणानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः ॐ आयुष्यं वर्चस्य गुं रायस्पोषमोदभिदम् इदगुं हिरण्यं वर्चस्व जैत्राया विशतादुमाम्
ओम ध्यौ शांतिर अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिर आपः शांतिर औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम हे हे रंभ त्वमेयेहि अंबिका त्र्यंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पते त्रयक्ष लक्ष लाभ पितुपितः नागास्य नागहारत्वं गणराजा चतुर्भुज भूषितः स्वायुधे दिव्यै पाशाङ्कुश परश्वधेः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम क्रतोः ह्यागत्य गृहानत्वं पूजां क्रतुं च रक्ष मे। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनीगर्भसम्भूतं कपीन्द्रं सचिवोत्तमं रामप्रियं नमस्तुभ्यं हनुमान् रक्ष सर्वदा। ओम ध्यायेत् आजानबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमल नीललोचनं नीरदाभं नाना अलङ्कारदीप्तं धततमरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम् अभयदं दक्षिणांगे वहन्तं नागपाशं च घण्टा डमरुकसहितं अंकुशं वामभागे नाना अलङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिदिवं पार्वतीशं नमामि। ओम या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापहा। ओम लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। ओम सीताराम पवन सुत हनुमान राधे कृष्ण की जय। जनक जननी पद मधुरज निज मस्तक पर धारी बंदौ मातु सरस्वती बुद्धि भल धारी पूर्ण जगत में व्यापित महिमा अमित अनंत सारे संसार के पाप को मात तू ही अब हंत। जय श्री सकल बुद्धि बल राशि जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी जय 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 वीणा कर धारी करति सदा सो हंस सवारी रूप चतुर भुज धारी
सब जाना। रामचरित्र जो रचे बनाई, आदि कवि पदवी को पाई। कालिदास जो भये विज्ञाता, तेरी कृपा दृष्टि से बाटा। तुलसी सूर आदि वेदाना, भये और जो ज्ञानी नाना। तीन और हो अवलंब, केवल कृपा आपकी अम्बा। करो कृपा सोई मातु भवानी, दुखत दीन निज दास जानी। कोट करे अपराध बहुता, तेहि ना धरे चित सुंदर माता। लाखो लाज जननी अब मेरी, विनय करो भाभी बहु तेरी। मधु के तब जो अति बलवाना, बहु युद्ध विष्णु से जाना। सब 1005 में घोरा, फिर भी मुख नहीं मोरा। मातु सहाय की है कहीं काला, बुद्धि विपरीत भरी कलहाला। तेहि ते मृत्यु भई कल गेई, पूरौ मातु मनोरथ मेरी। चंड मुंड जो ते विज्ञाता, शन मौ संग्रह तेहि माता। रक्त बीज से संवरत पापी, सुर मुनि हृदय धरा सब तापी। ताते हो सिर जिमि कर
Jai Shri Krishna, Gita Part, Chapter 2, Doha number 70. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Apuryamanam achala pratishtam, samudramapah pravishanti advat, tadvat kamayam pravishanti sarve, sa shantimapnoti na kama kami. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. फिर से एक बार हम दोहराएंगे. Let's repeat that. अपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी. जय श्री कृष्ण. तो इस श्लोक में भगवान जो सोच बता रहे थे अगले श्लोक पिछले श्लोक में, उस सोच को आगे ले जा रहे हैं. The thought that he was expressing, the idea that he was expressing in the previous shlok, he is carrying forward that thought, that idea now into this shlok number 70. और क्या कह रहे हैं? भगवान एक बहुत ही समझदार तुलना कर रहे हैं. He is making a very, very interesting and intelligent comparison to explain to us how the mind works. और कहते हैं कि अपूर्यमानम, पूर्ण का मतलब क्या है? To be full. To be full. अचलम प्रतिष्ठम. अचल जो अचल है वो हिलता नहीं है, डगमगाते नहीं है. समुद्रम आपह, आपह का मतलब है पानी. जैसे पानी समुद्र में प्रवेश करते हैं, प्रविशंति सयत्तद यत्वत्, जैसे हजारों सैकड़ों नदियां महासागर में प्रवेश करते हैं, तद्वत् काम, उसी तरह काम, desires, bad thoughts, bad intentions, yam pravishanti sarve, just like the thousands of oceans enter into the sea, just like that desires are entering, sa shantim apnoti na kama kami, are entering into our mind. And sarve, all. There's nobody, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसमें काम या स्व इच्छा प्रवेश नहीं करते हैं. Selfish desires, selfish wants doesn't enter. All of us are slaves to it. Some of us to a lesser extent, some of us to a greater extent. तो कुछ लोग में ये काम वासना जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और कुछ लोग में वो कम है, लेकिन है. तो वो आदमी, वो पुरुष शांति, स शांति मापनोति, वो पुरुष शांति को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं. न काम कामी, जो जिसमें कामना नहीं आते हैं. So all of us are being attacked. शास्त्र कहते हैं और यहां भी कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसे कोई समय नहीं है जहां ये कामना हम पर आक्रमण नहीं करते हैं. हर क्षण ये कामना आक्रमण करते हैं मन पे, तन पे. At every moment we are being attacked by desires, by wants. There is not a time when we are not being attacked.
But the difference is that that person who does not strive, who does not give in, who does not wallow in these desires, that person finds peace. उस व्यक्ति को शांति मिलते हैं जो इस काम वासनाओं को ठुकराते हैं, अपनाते नहीं हैं. See, some of us try to fulfill, strive to fulfill, obsess to fulfill all these desires. Whatever these desires may be, clothes, car, looks, whatever, money. Some of us strive to try and fulfill these desires. Some of us don't entertain the thought. We push it away. The one, Krishna Bhagavan said, the one who pushes it away, that person achieves peace, and obviously the one who does not push it away does not achieve peace. Now, this is a very, very logical explanation. And I always use this explanation. जिसको बिरयानी अच्छा लगता है या कोई भी खाना अच्छा लगता है, भोजन अच्छा लगता है, क्या आपने देखा कि वो व्यक्ति कभी कहते कि मुझे नहीं चाहिए? Have you ever experienced a person saying, no, I don't want any more biryani? No. हम खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं, खाते और खाते जा रहे हैं. So we are giving in to the temptation endlessly, ceaselessly. And we will never be satisfied because we always want. After we've eaten, we want some more. We've eaten that, we want some more. We've eaten that, we want some more. So we are actually feeding the flame, feeding the fire by giving into this kamna. इसलिए प्रभु कहते हैं कि हमें इसको इग्नोर करना चाहिए, ठुकराना चाहिए. We must ignore it. We mustn't entertain thoughts of trying to satisfy it, because a fire does not get put off, does not get extinguished because you add more fuel to it. Adding more fuel to it only increases the intensity of the fire. So when I eat because I want something, I am not going to satisfy my craving for that. I am merely going to increase it and increase it and increase it. So after I finish, I still want some more because the craving is still there. And then after I finish that, I'll want some more because the craving is still there. And the third time, I'll want some more because the craving is still there. So Bhagavan says, ignore the craving. And in this way, we will achieve peace. When you control that craving and decide for yourself that the craving is not going to affect you, then you will achieve peace because you're not obsessing over fulfilling that desire. लेकिन क्या होता है कि आजकल के दुनिया में हम इस कामना को संतुष्ट करने की प्रयत्न में भाग रहे हैं. We are running on the spot in trying to satisfy these desires. And they won't be satisfied. Because I see the latest cell phone, I want it, I buy it. But tomorrow there's a new cell phone. Now my new cell phone, or what was new, is now old. There's something new on the market. And it is the same with any material possession, whether it is car, whether it is clothes, whether it's house, whether it's cell phone, whether it's watch. So these things cannot be satisfied. Therefore, we shouldn't even entertain thoughts of trying to get happiness and satisfaction from them. तो इस श्लोक में भगवान का और गीता का यही संदेश है. जय श्री कृष्ण. रामायण पाठ होगी अब. Let us begin with the Ramayana invocation. जय ही सुमिरत सिद्धि होय सीताराम गणनायक करिवर बदना करो अनुग्रह सोय सीताराम बुद्धि राशि शुभ गुण सदना मूक होय वाचाल सीताराम
पंगुचरहि गिरिवर गहन जासु कृपासु दयाल सीताराम द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम सीताराम करुण अरुण वारिज नयन करो सुमम धाम सीताराम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह सीताराम कुमार मन करुणायन जाहि दीन परनेह सीताराम करौ कृपा मर्दन मयन वंदो गुरुपद कंज सीताराम कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज सीताराम जासु वचन रवि कर निकर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय कथा आरंभ होता है सुनो वीर हनुमान आसन को प्रभु आइए सिया सखा सहित भगवान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय. So today's part is in Balkan, and we're starting with Doha 1 to 4. There's two Dohas there actually. So let us begin with the first Doha. बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेई छन होई सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय कहु राम गुण गाथा भरद्वाज सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजिमान मद हिमगिरि गुहा एक अति पावनी बह समीप सुरसरी सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा देखि देव ऋषि अति मन भावा निरखि शैल सरि विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा सुमिरत हरई श्राप गति बांधी सहज विमल मन लागी समाधि मुनि गति देखि सुरेश डराना काम ही बोली कीन्ह सनमाना सहित सहाय जाहु मन हेतु चले हर्षिय जल चर केतु सुना सीर मन महु असी त्रासा चलत देव ऋषि मम पुरबासा जे कामी लोलुप जग माही कुटिल काक इव सबहि डराही सूक हार ले भाग सठ स्वान निरखि मृगराज छीनि ले जनि जान जर तिमि सुरपति न लाज सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय. Jai Shri Ram. So, in the part that we are reading this evening, firstly, Lord Shiva is saying that in this world, Jnani Mura na koi, there isn't anybody who is intelligent, who is brilliant, who is enlightened, nor is there a person who is deluded.
anything that happens, Jehi jas raghupati karhi jabas so tas tehi chana hoi. Whether we are enlightened or whether we are deluded is dependent upon Sri Ram. So how enlightened I am or how deluded I may be is dependent upon Sri Ram. Now to understand this, let us look at another verse from the Ramcharitmanas, in which Tulsidas says, Binu satsang vivek na hoi, Ram kripa binu sulabh na soi. इसका अर्थ यह है कि अगर हम ज्ञान पाना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम सत्संग में भाग लेने चाहिए. It is very important. Bilu satsang, without satsang, vivek no hui, no enlightenment will come. Knowledge of God will not come without satsang. Ram kripa binu sulabha na soi. And this is not easily obtained, sulabha, without the grace of Sri Ramchandraji. So, enlightenment comes from attending satsang, where you have the favor, where you are on the right side of Sri Ramchandraji. So that is what Lord Shiva is saying to us here. Then in the next verse, in the next sorta, a reference is made to Bharadwaj and Yagyavalkya. So, see, Ramcharitmanas has been repeated, the Ram Katha has been repeated many times over. So, Tulsidas is currently relating Ram Katha to us, and that's what we are reading every week over here. But within that Katha, there's a conversation that is taking place between Lord Shiva and Mother Parvati. So, in other words, what Tulsidas is doing is he's referencing, those of you who understand research, he's referencing the conversation that took place between Lord Shiva and Mother Parvati to make his point clear about the Katha. But at other times, he also references the conversation that took place between Bharadwaj and Yagyavalkya, two rishis. So, Yagyavalkya also related this Ram Katha to Bharadwaj. So, when it is fit, he references the dialogue between Lord Shiva and Mother Parvati. At other times, he references the dialogue between Bharadwaj and Yagyavalkya. And yet at other times in the Ramcharitmanas, he references the dialogue between Kakabhushundiji and Garurji. So in other words, to keep the flow of the story, and in order to bring to our attention different aspects of Ram Katha, at different times he refers to different dialogues, because these kathas have already been told before by these people. So therefore, in the next Sorta, he says, Yagyavalkya is talking to Bharadwaj, and he says to Bharadwaj that I'm going to talk to you about Sri Ram Katha. Kahu Rama Guna Gatha. I'm going to talk about the qualities of Sri Ramchandraji. And Bharadwaj Sadar Sunahu. You must listen with respect. So, whenever we listen to the kathas of Bhagwan, it is very important that we listen with respect. And respect means that we must ensure that there's no disturbance around the place where katha is taking place. We must ensure that no unnecessary talking is taking place. Because when we have our own conversations while katha is being recited or being related, it means we do not have respect for one, the kathakar, the one who is giving the katha, but also we don't have respect for the katha itself. And so therefore, Bharadwaj, Yagyavalkya is reminding Bharadwaj, even though Bharadwaj is such a accomplished rishi, he is reminding him that
आदर से सुनो. Then Tulsidas also tells us in the process that if we want to cross this ocean of birth and death, Bhava Bhanjan Raghunatha Bhaju Tulsi Tajman Mother, then Tulsidas says that you have to give up attachment and arrogance and pride. So you see, where Ram Katha, where Krishna Katha, where any Katha is being related, there is no place for arrogance, there's no place for attachment. That is why Lakarhara in Satyanarayan Katha, when he arrived at the house of the Brahman who was doing Satyanarayan Katha, he left his pile of wood outside. You leave your burdens outside, leave all the attachments outside. When we approach God, we approach Him in all humility, without any arrogance. So, what is the story that Yajnavalkya is saying to Bharadwaj? He's relating to him ki Himagiri Guha Ek Ati Pavani. Near the Himalaya mountain, there was a cave, a gufa. And on one side of this gufa, there was the Ganga river that was flowing. And the ashram in that environment became very, very attractive to Devarishi, to Narad Muni. Narad Muni was totally taken in by the Parvat, the mountain, the environment, the Nadi, the beauty of the river, and the forest. And as a result of this very conducive, very spiritually conducive environment that he found himself in, he became attracted to the feet of Bhagwan Hari, of Lord Vishnu. But it's interesting that when Tulsidas describes this, he says, Bhaya u Ramapati Pada Anuraga. He doesn't say that he was attracted to Lord Vishnu. He says he was attracted to Ramapati, the husband of Rama, the consort of Lakshmi. And in order not to spoil the story for you, there's a reason why he refers to Lakshmi, but that's something that becomes clearer as we will go through these parts during the next few weeks. But it's interesting that he doesn't refer to him as Vishnu or Hari, but he refers to him as Ramapati, the consort of Lakshmi. So Narad Muni is influenced by the environment that he finds himself in, and he becomes attached to Lord Vishnu. And he goes into a samadhi. He goes into a trance-like state. Now, this is also very interesting because Narad Muni was cursed by Daksha. Raja Daksha had cursed Narad Muni that he will never be able to stay in one place for more than a few minutes. He'll always be running around from place to place. And that's because when Raja Daksha had children, then his children lost all interest in the kingdom because Narad Muni had preached to them of how to be detached. So they all became detached individuals. And this didn't serve Daksha's purpose very well. He wanted to serve children who will take over the kingdom. But Narad Muni had taken them into the path of detachment. So Daksh became very upset about this, and he cursed Narad Muni. He said to him that you will never be able to stay in one place for a long time. That's why Narad Muni is always moving around. But here, because he became attracted to Lord Vishnu, and he became devoted to Lord Vishnu, that the effect of that curse was kind of nullified. So he managed to stay in Samadhi over there. And when he went into Samadhi, immediately Indra went into panic mode. Right? Suni gati dekhi Suresh darana. Suresh means refers to Indra. Indra became worried that Narad has gone into Samadhi, has gone into meditation. And what if through his meditation he gets certain powers
and he dethrones me. He takes away my position. So Indra then instructs Kamdev, the Lord of Love, to intervene and to ensure that nothing happens, that nothing good comes out of the samadhi that Narad Muni is going to go into. But his fear is actually foolish, according to Tulsidas. Because, see, if a dog has a dry bone in its mouth and he comes across in front of a lion and he runs away thinking that the lion is going to rob him of the dry bone, then he's foolish. The lion is not interested in his dry bone. So similarly, Indra is behaving in a foolish manner here to feel threatened by Narad. So what are some of the takeaways from this part that we've read this evening? The one is that Vivek, enlightenment comes to those who participate in satsang like we are doing now. And enlightenment comes to those who propitiate Sri Ramchandraji, who make Sri Ramchandraji favorable towards them so that they can get that wisdom, that enlightenment. But it also teaches us that sometimes we worry unnecessarily, like Indra is here, that somebody else is doing good and we see that good as a threat to ourselves, and we need to be careful of those things. अच्छा, हम यहाँ पर समाप्त करते हैं. कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु झाइए, सिया सखा सहित भगवान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय. जय श्री राम. तेरे शरण आए, देखो है अम्बे माता, हो माता तेरे शरण आए, देखो है अम्बे माता, हो माता तेरे शरण आए, देखो है अम्बे माता. चारों दिशा से भक्ति आशा से भक्तों के भीड़ आए, हो माता तेरे शरण आए, देखो है अम्बे माता, हो माता तेरे शरण आए, देखो है अम्बे माता. तू जो कहे माँ वो सब सुनेंगे, दिन रात तेरी पूजा करेंगे, सुख हो या दुख हो हम सब सहेंगे, हर हाल तेरी भक्ति करेंगे, भक्तों के पीरा हरने वाली माँ, कोटि कोटि है प्रणाम, हो माता तेरे शरण आए, देखो है अम्बे माता, हो माता तेरे शरण आए, देखो है अम्बे माता. चारों दिशा से भक्ति आशा से भक्तों के भीड़ आए, हो माता तेरे शरण आए, देखो है अम्बे माता, हो माता तेरे शरण आए, देखो है अम्बे माता. तीनों लोगों की तो धानी है माँ, अंतर्यामी है तू
ज्ञानी है माँ, सुख दुख कारण करो माँ, सब रन के अर्चन ग्रहण करो माँ, दुनिया के रक्षा करने वाली माँ, रोशन रह घराना। ओ माता तेरे चरण आए, देखो है अम्बे माता, हो माता तेरे चरण आए, देखो है अम्बे माता। चारों दिशा के भीरा तेरे शरण आए, देखो है अम्बे माता, हो माता तेरे शरण आए, देखो है अम्बे माता, तेरे शरण आए, देखो है अम्बे माता, तेरे शरण आए, देखो है अम्बे माता। ओम सीताराम पवन सुत हनुमान, राधे कृष्ण की जय। जय नारायण जय जय दुर्गे, जय जय अम्बे नमो नमः, जय जय अम्बे नमो नमः। जय नारायण जय जय दुर्गे, जय अम्बे नमो नमः, जय अम्बे नमो नमः। तेरा पावन सुमिरन करता, अंतर में सुख भर आता। तेरा पावन सुमिरन करता, अंतर में सुख भर आता। रोम रोम में प्रेम तिहारा, वंदे भक्त बिगड़ जाता। जय कल्याणी जय जय दुर्गे, जय जय अम्बे नमो नमः। जय अम्बे नमो नमः। मन अंतर में मंत्र बनो तुम, जीवन यादव गाधो माँ। मन अंतर में मंत्र बनो तुम, जीवन याद बुझा दो माँ। जन्म जन्म के संतापों को तेजस अपर जला दो माँ। जय रुद्राणी जय जय दुर्गे, जय जय अम्बे नमो नमः, जय जय अम्बे नमो नमः। मंगलता की देने वाली, मनवांचक फल बरसाए। मंगलता की देने वाले, मनवांछित फल बरसाए। द्वार तिहारे आ गए मैया, गोर धारण जानी। जय ब्रह्मानी जय जय दुर्गे, जय जय अम्बे नमो नमः, जय जय अम्बे नमो नमः। राम भजन हम निस दिन करते,
मन में जपते नाम विमल। राम भजन हम निस दिन करते, मन में जपते नाम विमल। शरण पढ़ा तो एक सहारा, मैया तेरे शरण कमल। जय कृष्णानी जय जय दुर्गे, जय जय अम्बे नमो नमः। जय अम्बे जय नारायणी जय जय दुर्गे, जय जय अम्बे नमो नमः। जय जय अम्बे नमो नमः। ओम सीताराम पवन सुत हनुमान, राधे कृष्ण की जय। ओम जय ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन सुखदाता मैया, जय सरस्वती माता। चंद्रवदनी पद्मासनी, ज्योति मंगलकारी मैया, ज्योति मंगलकारी। सोह शुभ हंस सवारी, सोह शुभ हंस सवारी, अतुल तेज धारी मैया, जय सरस्वती माता। भाई कारणी वीणा ध्याये कर माला मैया, ध्याये कर माला। शेष मुकुट मणि सोहे, शेष मुकुट मणि सोहे, गलमुखियन माला मैया, जय सरस्वती माता। देवी शरण जो आवे, उनका उद्धार किया मैया, उनका उद्धार किया। बैठी मंत्रा दासी, बैठी मंत्रा दासी, रावण संहार किया मैया, जय सरस्वती माता। विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो मैया, ज्ञान प्रकाश भरो। मोह अज्ञान अवधिमीका, मोह अज्ञान अवधिमीका, जग से नाश करो मैया, जय सरस्वती माता। धूप दीप फल मेवा, माँ स्वीकार करो मैया, माँ स्वीकार करो। ज्ञान चक्षु दे माता, ज्ञान चक्षु दे माता, जग निस्तार करो मैया, जय सरस्वती माता। आ सरस्वती जी की आरती जो कोई जन गावे मैया, जो कोई जन गावे। हितकारी सुखकारी, हितकारी सुखकारी, जन भक्ति पावे मैया, जय सरस्वती माता। जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विद्याता। ओम जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय सरस्वती माता। ॐ कर्पूरगौरं करुणा अवतारं
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुत्वध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाये तनोहरि। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते। You may sprinkle water around your arti. Om yani kani cha papani janmantarkrutani cha tani tani vinashyanti pradakshina pade pade. Om sarvesham swastir bhavatu sarvesham shantir bhavatu sarvesham purnam bhavatu sarvesham manglam bhavatu sarve bhavantu sukhinah sarve santu niramaya सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सत्कमय तमस्यो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम अपराधः सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दास्यो यमिति मामत्व क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। ओम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष त्वं परमेश्वर। ओम बोलो गणेश भगवान की जय। ओम सीताराम की जय। ओम लक्ष्मण जी की जय। ओम पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम राधे कृष्ण भगवान की जय। ओम शिव शंकर पार्वती माता की जय। ओम दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी माता की जय। ओम सनातन धर्म की जय। ओम लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम राधा माधव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम।